Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video, we will discuss about the console class. Now in this video, we will discuss about the one more type of user input. To take a user input in Java, use a JOptionPane class. So I will open first PDF. Now in the last video we will discuss about the console class. Now JOptionPane class is also provides us in Java to take a user input. How can I use this? I will show with example, then you can easily understand. So I will open Notepad. So here will be write a basic structure of our Java program. Then write main method here will be a first you can save this. Use so I will show you how to take a user input using a JOptionPane class. Here will be a create a variable like a request Integer.parseInt, then use a JOptionPane.showInputDialog, then bracket open. Here will be a enter the integer value. So this is a way you will be take user input using a JOptionPane class. इस तरीके से आप JOptionPane से यूजर से इनपुट ले सकते हो एज अ इंटीजर. JOptionPane क्लास हमें इस पैकेज के अंदर मिलेगा. import javax.swing then this package. अगर आपको क्लास का नाम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप स्टार लगाकर छोड़ सकते हो. सो पहले इसको ट्राई कर लेते हैं हम सेव करके. javac not java. Here will be a compile successfully. Now if I execute, it will be not execute, it will be execute, but output will be not show. This is a 10. So now I will show you how to show your output. आप कैसे अपना आउटपुट भी शो करा सकते हो. इस वे से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो. JOptionPane शो इनपुट डायलॉग, इसका मतलब होता है ये जो आपके एक विंडो सामने ओपन हो रही है स्क्रीन पे जहाँ पर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, वो हमें ये क्लास प्रोवाइड करवाता है. शो इनपुट डायलॉग, देन इंटीजर योर
जो भी आपको मैसेज देनी है, वट एवर मैसेज, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। देन इन अगर हमें फ्लोट वैल्यू लेना हो तो फ्लोट एफ इक्वल्स फ्लोट डॉट पास फ्लोट using same as it is JOptionPane show input dialog, enter the floating point value। ऐसे आप डबल भी ले सकते हो। integer sorry double dot pass double JOptionPane, then show input dialog, enter your decimal values। So this is where you will take a user input like integer, double, float. Now I will show you how to show your output window, your output। आप कैसे आउटपुट शो करा सकते हो, उसके लिए भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा JOptionPane now show message dialog, show message dialog, then provides here null, then here your inputted value। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हो। प्लस लगाकर जिससे एक का देखना है। I will compile first, compile successfully, then execute। Enter your integer value 12, enter your floating point, enter your decimal, your inputted value is 12। यहाँ पर इसलिए 12 ही शो हो रहा है क्योंकि हमने एक को ही शो करवाया। मैं आपको सबको शो कराकर दिखाऊंगा। कंट्रोल डी, then change your variable name, इसको थोड़ा यहाँ पर डाल दिया मैंने, इसको यहाँ पर डाल दिया। अब हम चेक करेंगे हम कैरेक्टर वैल्यू कैसे लिख सकते हैं JOptionPane से। ठीक है, क्रिएट अ वेरिएबल, यूज JOptionPane, then show input dialog, here write enter the character, enter in character value, enter in character value,
then use a create function. This way user write a character value, then show JOptionPane as it is. I will copy this line, here will pass ch, then last one is string, use str as a variable, then here same as it is JOptionPane dot show input dialog, enter a word, sentence. Now use this one, Control D. So this is a way, इस तरीके से आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू ले सकते हो यूजर से यूजिंग अ जावा JOptionPane क्लास. नाउ इसको हम कंपाइल करेंगे, java c, it will be compiled successfully. Now clear screen. Enter your integer. This is integer. Okay, show. Enter your floating point. Enter your double. Your input this. Enter your character. Your character is. Enter your word of sentence. Because I have not changed a variable, so that is why show r here. Here will be a change str. Now one more time I will compile, then execute, enter. Then you can see this here, it will be a compile and execute successfully. Okay, back to this one. So इस तरीके से आप JOptionPane के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हो इन जावा के अंदर. ये हमारे तीनों क्लासेस कंप्लीट हो गए. तीनों वे से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, जैसे कंसोल, स्कैनर और JOptionPane से. In the next video we will discuss about the operators in Java. So thank you so much in this video. If you are really enjoy, please share this video with your friends. Thank you.